Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are enjoying happy and healthy life. My name is Mahnoor Maryam and I am gonna host today's session. Let's start our today's session with the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. तेरी कुदरतों का शुमार क्या तेरी वसअतों का हिसाब क्या तू मुहीत आलम रंगो बू तेरी शान जल्ला जलालुहु. Now I would like to call Hafiz Muhammad Hamza Hedri for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Now we will come towards our topic, which is on the art and public speaking and effective presentations. As we know, public speaking is the art of giving power to words to influence, inspire, and transform others. Now I would like to call our remarkable and talented guest speaker, Fajjar Azhar Hussain. She is a motivational speaker and trainer with multinational or multi-traditional experience. Fajjar, are you there? Yes, thank you so much, Manur, for such a kind introduction. Hello, Assalamu alaikum. This is Fajjar Azhar, and I am doing BS Honor in Zoology from Khanate College for Women. And today I am going to highlight a very important topic, the art of public speaking and effective presentation. So basically, public speaking is not a language or course, it's a skill. I have seen many people that are well sophisticated and educated, but they still have fear of being public speaking and being in front of people to interact. Today I am going to highlight such strategies that maybe prove helpful to become a great speaker and such points to cope up your fear and to make your presentations effective. So the content that I'm going to cover today is you have shown on your screen. Next slide. So basically, you are not afraid of public speaking. You are afraid of falling in front of everyone. That is being afraid to interact people. What is glossophobia? Basically, 75% of people suffer from speech anxiety. It basically begins around age of 13. That people become fair to interact with the people to communicate. Next slide.
So, what are the benefits of public speaking? Basically, public speaking improves your self-confidence and make sure you are more comfortable around the people to whom you are going to interact, and it gave you the power to communicate, to deliver your message around whom you interact with the people, and make a difference in your life, business, career, and community. Like there are different aspects how to communicate in your personal life and your in business, career, and the community where you live. So you have demonstrated your knowledge, whatever you are going to interact or communicate with the people, you have a grip on your topic, like do research on it. If you are have a great grip on your topic, you can confidently speak in front of the public. And then create your own spotters. You must have fine tune your verbal and non-verbal communication skill. We will discuss later on slides what is the verbal and non-verbal communication skills. Like I am speaking, this is basically verbal communications skills, that I am going to communicate with the words that may be written or spoken. Like it consists of speaking, listening, and reading. Whereas non-verbal communication, like we're communicating without any spoken or written word, like your gesture, your facial expressions, your eye contact, your pitch, your appearance, and your dressing. So next slide. So what are the basically barriers that mostly people suffer while speaking? These are basically स्टेज ऑफ फेयर. लाइक आपको होता है कि अगर हम प्रेजेंटेशन के लिए जाएं या स्टेज पे, तो हमें यही होता है कि हम भूल ना जाएं, या ये बेसिकली हमें ऑडियंस का फेयर होता है कि लाइक अगर हम अपनी फ्रेंड्स के सर्कल में बात करें तो हमारा जो टोन है और जो हम स्पीक कर रहे हैं वो हम कॉन्फिडेंटली हम बोल रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू जब आप देखते हैं कि आपने एक टॉपिक डिलीवर करना है और वो भी ऑडियंस के सामने, तो आपका माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि यू स्टार्ट फॉरगेटिंग अबाउट द थिंग्स. सो दैट्स ऑल द माइंडसेट गेम. अगर आप एक दफ़ा इतना ओवर थिंकिंग ना करें, यू हैव अ क्लैरिटी ऑन योर टॉपिक, सो यू कैन ईजिली गो थ्रू इट. So lack of knowledge about the audience, like we will discuss later on कि audience से भी बहुत ज़्यादा impact पड़ता है कि like what sort of people you have, like आप student level पे communicate कर रहे हैं या कौन से level पे कर रहे हैं. Improper discord, improper time management, improper vocal behavior, and inadequate audio. So, what will be the guideline for the effective presentation? I am going step by step that may prove to be helpful in your future career as well. So, first one is planning. आपकी planning बहुत ज़रूरी है. Like if you are going to do something, तो आपके पास सबसे पहले planning होती है कि आपने उसमें करना क्या है. अब planning में क्या क्या चीज़ें हैं? Planning who is your audience, why are they there, what is your goal, how long will it be, and where will it take place. Like these factors impact a lot. Like आपका गोल क्या है, आपने क्या अचीव करना है अपनी स्पीकिंग से, कि आपने ऑडियंस को आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि वो इजीली क्लैरिटी से डिलीवर हो जानी चाहिए. लाइक यू यूज़ योर मीडियम बायोलिंग्विस्टिक्स. लाइक पीपल अगर जिन्हें इंग्लिश नहीं इतनी आती, तो उन्हें आपकी जो बात है उर्दू में भी समझ आ जानी चाहिए. और आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है. लाइक अगर आप एक ही लिए जा रहे हो एक ही चीज़ को पकड़ के, तो पीपल गेट बोर्ड कि आपने टाइम का ख्याल इसके साथ साथ रखना है. एंड वेयर इट विल इट टेक प्लेस, लाइक आपके बैकग्राउंड जो चीज़ें होती हैं, नॉइज डिस्टर्बेंस कैसा है और इन्वायरमेंट कैसा है, लोग जो हैं एग्जॉस्ट मतलब फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं होगे, एटमोसफेयर कैसा है वहाँ का. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. अच्छा, आपकी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? योर ऑब्जेक्टिव, आपने क्या ऑब्जेक्टिव क्या क्या अचीव करना है. देन योर इंट्रोडक्शन, देन योर मेन कंटेंट, कंटेंट मतलब मेन बॉडी क्या है आपकी, एंड देन कंक्लूड एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम द ऑडियंस, एंड देन क्वेश्चन आंसर सेशन. अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन. लाइक हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. अगर आपका इंट्रोडक्शन आप वेल बूस्टेड हैं, आप कॉन्फिडेंट है, और अगर आप स्टार्ट बहुत अच्छा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और वो लिसन करेगी. देन वी हैव अ मेन थीम. आपका जो मटीरियल आप जिस टॉपिक पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उस पर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, और आपको जो आप बता रहे हो उस पर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड कंटेंट शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, बिकॉज मोस्ट ऑफ क्या होता है कि आप जिस टॉपिक पे बता रहे होते हैं, तो आप अपने टॉपिक से हट जाते हैं, इररेलेवेंट चीज़ें ऐड करते हैं. तो
इट क्रिएट लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शन वो करते हैं कि ऑडियंस जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेती. देन वी हैव अ समरी कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपका की मैसेज होना चाहिए कि आप कंक्लूड क्या करते हैं और रिकमेंडेशंस फ्रॉम द ऑडियंस. अगर आपने प्रॉम्प्ट यूज करने हैं तो यूज शॉर्ट बुलेट कीज कीवर्ड्स ओनली. लाइक होता है ना कि पूरा स्लाइड पे कॉपी पेस्ट मतलब कर लेते हैं जो बताना है. तो ऑलवेज ट्राई टू यूज शॉर्ट कीज. लाइक कोई डेफिनेशन है लाइक उसका वर्ड यूज कर लें एंड ट्राई टू स्पीक बाय योर ओन हार्ट, तो इट मेक्स लुक more attractive. Put your entire prompt onto your PowerPoint slide. These prompts are from for you. Then moving on to the next slide, that is preparation material. आपके preparation material क्या होना चाहिए? Handouts आप खुद बनाएं जो आपको important लग रहा है. Personal notes, internet and visual aids. Like जितना आप हो सकता है उसकी research करें topic की, और आपका experience भी होगा, चीज़ें add on करें तो it makes a good material for your presentation. Then we have know your audience, knowing as much as you can about the knowledge, like their age, the number of people you will be lecturing or speaking to. Like age matter a lot. Like अगर आपके यूनिवर्सिटी लेवल के या फ्रेंड्स हैं तो आपको उनकी मेंटालिटी का पता होता है कि वो आपसे क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं. लाइक आपकी प्रेजेंटेशन में वो क्या चीज़ें चाहते हैं जो नीड ऑफ द आर हो. अगर एज थोड़ा बुरा मतलब ज़्यादा एज है तो आप उसके लिहाज से अपना एक्सपीरियंस और काफ़ी ज़्यादा मटीरियल में चेंजेस करते हो. तो ये मटीरियल जो है ये डिपेंड, आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है. इफ यू गेट सम आइडिया व्हाट दे होप टू अचीव फ्रॉम दिस स्पीच, जो मैंने आपको बात की है, एंड देन दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर इन मोर इफेक्टिव वे. आपको आइडिया हो जाता है, माइंडसेट हो जाता है आपका कि आपके पास ऑडियंस किस तरह की है. Then choose a proper topic. Consider the occasion. Consider the audience level of knowledge about the topic. Consider your purpose and consider whether the audience would be interested about the topic. Maybe आप ऐसा टॉपिक चूज कर लें कि ऑडियंस का इंटरेस्ट ही ना उस टॉपिक पे, या वो टॉपिक जो है वो आजकल सोसाइटी में ना चल रहा हो. आप इरेलीवेंट कोई टॉपिक ले आए अपने इंटरेस्ट का. तो आपने टॉपिक चूज करते वक्त ये देखना है कि जो नीड ऑफ द आवर है, जो हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है जिस चीज़ की, आपका टॉपिक वैसा होना चाहिए. So, the better prepared you are for your speech or lecture, the better the speech will be delivered. It is better to be over prepared than under. Then never assume no one will notice and no one will ask about that. Always assume someone will ask. And try to think all the questions you could be asked and make sure that you have an answer. अब आपने ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको मैं आगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बताऊँगी. लाइक आप कहते हैं कि हम स्पीक कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी आपकी स्पीकिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऑडियंस जो नोट कर रही होती है, नोटिस कर रही होती है, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके स्पीकिंग पे, जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं चीज़ें. देन टाइम इट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड. आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाता है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, लाइक 10 to 15 मिनट्स अगर दिए जाते हैं. सो अगर यू कैन नॉट रश योर लेक्चर टू फिनिश एज दिस विल अफेक्ट डिलीवरी. ठीक है, इतना भी जल्दी स्पीक ना करें कि आपकी ऑडियंस को भी समझ ना आए कि आप बोल क्या रहे हैं. ठीक है, इट्स बेटर कि आप टाइमली मतलब टाइम अपना यूज़ करें, बट इट्स नॉट गुड कि आप टाइम से एक्सीड कर दें और आपकी ऑडियंस जो है वो फिर बोर होना शुरू लग जाए कि अब मतलब इतना, जैसे होता है ना, हम बहुत लंबा लेक्चर चला गया किसी मैम का या टीचर को, तो हम कहते हैं कि क्या मतलब बोर मतलब हम हो रहे हैं, और इंटरेस्ट जो है ऑडियंस लॉस कर देती है. देन प्रिपेयर अ नोट फॉर योर सेल्फ. It's for you. There is nothing wrong in holding a piece of paper while you present. It's always good to have a personal note so that your mind would not to go blank. However, always read your note before you arrive at the venue so it's fresh in your mind. It's basically हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में जब प्रेजेंटेशंस होती हैं तो तब इट्स नॉट बैड कि अगर आप कोई नोट ले जो, और अगर आपको कोई एग्जैक्टली मतलब कोई चीज़ भूल गई है तो बजाय आप वहाँ पे गुमसुम खड़े रहें, अगर आपके पास नोट हो तो आपके पास आपको फ़ौरन चीज़ें याद आ जाती हैं, एज कम्पेयर टू कि अगर आप बिल्कुल भी ब्लैंक होके बिल्कुल प्रिपेयर्ड ना होके जाएं. दिस इज फॉर दोज पीपल जो जिनको बहुत ज़्यादा फेयर है पब्लिक स्पीकिंग में. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी हम अचीव नहीं कर सकते. लाइक इट्स नॉट लैंग्वेज के आपको आज की कोई कोर्स ले लेंगे या आप कोई भी डिग्री कर लेंगे. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग दिस स्किल. So now that you have prepared a wonderful speech and you have also timed it, it's time to practice and rehearse as many times as possible.
लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा फेयर है पब्लिक स्पीकिंग में, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। के सपोज करेंगे कोई भी नहीं है आपके इर्द गिर्द, और यू स्टार्ट स्पीकिंग दिस जस्ट लाइक योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जैसे आप स्पीक करते हैं, तो आपका जो लेवल है फेयर, ये बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा। एज यू ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चूज अ प्रॉपर अटायर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी ओकेजन में जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहे होते हैं। लाइक अगर बहुत वेल सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड कोई पर्सन है, उसकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है, तो आपके ऑटोमेटिकली माइंड सेट हो जाता है कि पर्सन मतलब अच्छा है, आपका दिल चाहता है कि कोई बात जब कर रहा है तो आपकी अटेंशन जो है वो उस तरफ हो जाती है। तो आपकी अगर आपकी ड्रेसिंग ही उस ओकेजन के लिहाज से नहीं होगी, लेट्स सपोज कि अगर कोई शादी के इवेंट में जीन्स और शर्ट पहन जाए, तो ऑब्वियसली अजीब ही लगेगा ना, हर कोई नोटिस करेगा। इसी तरह आपकी प्रेजेंटेशन जिस ओकेजन, लाइक अगर प्रोफेशनल मैं बात करूं ऑफिस में, तो आपके उस लिहाज से डिफरेंट होती है, आपके घर में डिफरेंट होती है, और डिफरेंट जगह पे आपकी ड्रेसिंग जो है वो डिफरेंट होती है। लाइक यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि क्या क्या सेमी फॉर्मल में क्या ड्रेसिंग है, और बिजनेस कैजुअल में और कैजुअल में। बिजनेस कैजुअल में आपकी टाई आ जाती है, एंड कैजुअल में आपकी कोई भी पोलो शर्ट आ जाती है। और then we have audio visual aids. In case you plan to use any audio visual aids, take a few minutes to check the functionalities before you start delivering the speech. Arrive early to the venue so that it will convenient for you to do the same. लाइक ये नहीं है कि अगर आपने कोई यूज़ करना है तो आप एट द टाइम जब आपका स्टार्ट होता है तब आप यूज़ कर रहे हो, तो कभी कभी आपकी एलईडी नहीं चल रही होती, कभी आपका इंटरनेट इशू होता है, बहुत स्लो आ रहा होता है। तो ये जो है ना चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग पे और ऑडियंस पे, बैड इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। और विजुअल एड्स में आप यूज सिंपल फॉन्ट, कलर एंड ग्राफ्स। कलर से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और ऑडियंस भी अट्रैक्ट होती है एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल या बहुत ज़्यादा भरा हुआ मटेरियल से, तो वो मैसी सा लुक देता है और वो अच्छा नहीं लगता। मैक्स आप ये कोशिश क्या करें कि यूज़ बुलेट्स या और ग्राफ्स यूज़ करें, कलर्स यूज़ करें, ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। Don't crowd your slides, it will not look professional. New and different visual aids wake people up. Then we have deliver with confidence. ठीक है, अगर आपको ग्रिप है तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। Concentrate on the message, not the medium. Focus your attention away from your own anxieties and concentrate on your message and your audience. Because if you can speak, you can influence, and if you can influence, you can change the lives. So, words are free, it's how you use them that make words to you. आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, लाउडर क्लियर होनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए वर्ड्स में। अच्छा, अब पिच और ओवर एम्फोसाइज का क्या है, इसका मतलब कि आप अगर कोई आपने बात जो है एम्फोसाइज करनी है, तो आपकी ऑटोमेटिकली पिच जो होती है वो हाई हो जाती है, एज कम्पेयर टू आपकी जो दूसरी बातें होती हैं जो आपने एज यूजुअल नॉर्मल रूटीन में कहनी होती है, आपकी पिच जो होती है उस लिहाज से कम होती है। तो आपकी जो पिच है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लाइक अगर आपने किसी बात पे कंसंट्रेट करना है या आपने ऑडियंस को मुतवज्जा करना है, तो आपकी पिच जो है थोड़ी हाई हो जाएगी उस बात पे। Then give enough time for the questions. Like question answer session is very important, ताकि audience को कोई भी अगर कोई क्यूरी है तो वो पूछ लें आपसे। Allocate necessary time for audience to question you. Don't be too defensive when you face questions that you do not anticipate. Handle all the questions in a relaxed or effective manner. लाइक बाजुकात होता है कि आपकी ऑडियंस भी ऐसे सवाल कर लेती है या डिस्टोशन इतनी होती है कि आप खुद इरिटेट फील होते हैं। तो डोंट मेस अप, बी रिलैक्स और आंसर द ऑडियंस इन इफेक्टिव मैनर। And at the end, thank your audience. Prepare and practice how you will conclude. Ending your presentation strongly will improve the effectiveness of your presentation and clearly signals to the audience that you are done. Then we have next slide.
Next slide. So always present the present version of yourself. अगर ये graphical हम pie chart देखें तो इस पे आपका 7% है what you say, like what you speak, 80% है आपकी tone, आपकी pitch और your voice, and 50% 55% आपकी appearance है और body language. अब ये जो appearance और body language है आपकी, ये आपकी non verbal communication में आ जाती है, like your gestures and your facial expression, eye contact, your pitch, speed. तो 55% सबसे ज़्यादा आपकी non verbal communication affect कर रही होती है आपकी presentation पे. Then moving on to the next slide, words that don't count. ये सारे जो words आपको slide पे show हो रहे हैं, these are basically non verbal communication. Your way of talking, your posture, your appearance, your head movements, these are all. Then we have a next slide. So, what is the power of nonverbal communication? Nonverbal communication is the most powerful form of communication, more than even words or even voice, because जिनके पास source नहीं होता, they can't speak, but उनके facial expression, उनके nonverbal gestures जो होते हैं, they make the clarity के वो deliver क्या करना चाह रहे हैं. Non-verbal communication help to create your image in other mind, and even you can express your emotions and feeling in front of others which are unable to express in words. Then we have a next slide. Facial expressions आपको यहाँ पे show हो रहे हैं, like happiness, sadness और गुस्सा है आप या fear है आपको, तो ये सारे आपके expressions जो हैं शो हो जाते हैं. लाइक अगर हम किसी से हाइड भी कर रहे हो, लाइक अगर हम फीलिंग सैड, तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन को पता चल जाता है कि यार तुम्हारा मूड नहीं सही या तुम सैड लग रहे हो. तो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. आपका आई कांटेक्ट क्या होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग में या फॉर्मेट स्पीकिंग में? Look at the audience right in the eye. Cover all the audience and do not miss anyone. आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस पे होना चाहिए, नॉट एज कम्पेयर टू कि आप वॉल्स पे देख रहे हैं, डोर पे देख रहे हैं या इधर उधर, तो ये बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है. देन योर बॉडी कांटेक्ट, इट ऑलवेज गुड टू हैव अ नॉर्मल हैंडशेक. टू फर्म मीन्स एग्रेसिवनेस, मतलब बहुत ज़्यादा जोर से कर लेंगे तो वो एग्रेसिवनेस, और अगर बहुत लाइटर कर लेंगे तो मीन्स यू आर वीक. जैसे नेक्स्ट पर्सन आपका हैंडशेक करे, प्रॉपरली आप हैंडशेक करें. Then we have a signs of stop, victory, and okay, like and dislike. Then what will be your body posture? आपका क्या होना चाहिए speaking के time? Be active and straight upright. बिल्कुल आपका straight होना चाहिए, backbone आपकी बिल्कुल straight होनी चाहिए. Do not lean or on the wall or do not bend your back. It means you are laziness, create laziness or bad impact on the audience. अगर आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर शो हो रही है रेड ड्रेस पे जो गर्ल है, उसने उसका जो हैंड का पोस्टर है, इट इंडिकेट्स अ क्लोज पोस्टर, लाइक कैन indicate hostility, unfriendliness, and anxiety. That means she is not able to communicate with anyone, or she is not friendly, or she is not in the mood of to communicate. Whereas in the right side picture, it shows an open posture, may indicate friendliness, openness, and willingness. That means it allows other to communicate with them. देन नेक्स्ट पिक्चर में आपको शो हो गया कि अगर आपके हैंड जो हैं क्रोस्ड हो और बिल्कुल आपने बैक पे रखे हो, तो इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग योर विसिनिटी एंड डू नॉट अलाउ others to communicate and show aggressiveness. Whereas in the next slide you have shown the hands open, there is open posture, it means that you are free to communicate and you show your friendly behavior and you are confident to talk. In the next slide this is the same, that your hands close, it means that you are creating your vicinity, dominance.
Then we have a gesture and posture, but will be our positive gestures while delivering the speech. Your hands will be open, your eye to eye confrontation. Then you have a smile on your face and equal handshake. आपके पोस्चर कैसे होने चाहिए? स्टैंडिंग पोजीशन, वॉकिंग स्टाइल एंड हैंड मूवमेंट. वॉकिंग स्टाइल इट मीन्स दैट यू आर क्रिएटिंग योर विसिनिटी एंड यू आर वॉकिंग हियर एंड देयर व्हाइल स्पीकिंग. ये नहीं है कि बिल्कुल ऑडियंस के आप ऊपर जाके गिर जाएं या बहुत आगे आ जाएं, तो भी डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है. लाइक वॉकिंग इज गुड इन प्रेजेंटेशन, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्शन कॉज करे. So five postures to avoid at office. These are shown in the picture, like fidgeting, then slouching, frowning, arms crossed अगर आपके हों, or staring at window या wall during your office time. अच्छा, आपकी appearance कैसी होनी चाहिए? Like हम कहते हैं ना, never judge a book by its cover, but actually in our society we judge a book by its cover. We firstly see a person and make an image on our mind कि ये person कैसा है या ये कैसी है. तो आपकी ड्रेसिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. अगर आपकी ड्रेसिंग लिहाज से नहीं होगी तो इमेज जो है वो बहुत इम्पैक्ट बैड बन जाएगा ऑडियंस के, कि लाइक आपकी वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपकी प्रेजेंटेशन में या आपकी कोई बात सुनने में, एज कम्पेयर टू बहुत सोफिस्टिकेटेड आप वेल मैनर्ड और बन के जाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडियंस पे. So your dress should be clean. So avoid improper dresses. Take care about everything from your hair to shoes, because these minor things impact a lot. Then seeing in the picture, professional and professionalism में आपको difference जो हो रहा होगा. Like अगर आप एक स्कूल में हैं तो हर किसी भी कोई आप ले लें, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, या जो भी आपको प्रोफेशनल है सिस्टम, उसमें एक प्रॉपर आपका ड्रेस होता है. लाइक इट इंडिकेट्स दैट यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट प्लेस. तो अगर ये आपके डिफरेंट कलर स्कीम्स होंगी, लाइक स्कूल में अगर हम डिफरेंट पहन जाएं तो ऑब्वियसली वो नॉन प्रोफेशनल सा लगता है. अगर ये डिफरेंट मतलब सेम एक स्कीम है, कलर स्कीम, तो इट क्रिएट्स गुड इमेज. अगर हम गर्ल्स की ड्रेस कोड्स की बात करें तो बिजनेस फॉर्मल में ये आपको शो हो रहा है. बिजनेस में बिजनेस कैजुअल, स्मार्ट और कैजुअल में ये आप डिफरेंस देख सकते हैं क्लियरली. As we don't have enough time, so we are going to wind up in few minutes. Then we have, अगर हम बॉयज़ की बात करें, कैजुअल मैंने आपको बता दिया, पोलो शर्ट और जीन्स होती है स्मार्ट कैजुअल में, और बिजनेस कैजुअल में और बिजनेस प्रोफेशनल में नेकटाई होती है, वॉच होती है, लेदर शूज़ होते हैं. एज कम्पेयर टू बिजनेस आप देख सकते हैं प्रोफेशनल और बिजनेस कैजुअल में क्या डिफरेंस है. अच्छा, देन वी हैव अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अराउंड द वर्ल्ड. हम अगर कल्चरल इफेक्ट देखें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हो रही है हमारी कंट्री में, सो इन ओकेजन्स ऑफ ईद वी आर एक्सप्रेसिंग आवर हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट एंड लव फॉर अदर्स. दीज आर बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेज. Then we have in USA, there is quite informal way of non-verbal communication, that is a handshake and a smile and a hello. So what will be the impact of speaker? अगर आपका text 7% है, आपकी visuals 55% है, आपका vocal 38% है, like these picture shows they are very frustrated or they are get bored, या तो आपकी presentation में flaws हैं. Next slide. अब इसकी वजह क्या हो सकती है कि इमेज ये बने ऑडियंस के माइंड में. सो देयर इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, देन देयर लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लाइक देयर लैक ऑफ प्रैक्टिस. आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपकी जो वॉइस है वो उस लिहाज से नहीं है. यू डोंट हैव अ ग्रिप, यू हेजिटेट, you have a fear to speak. So hesitation and vaguity in the results that you want to conclude. ठीक है, you are even you are not clear about what you say. Then we have factors of successful presentation. Successful presentation के क्या factors हो सकते हैं, like audience at the end cheer up. We have be over prepared. Then we have rehearsal and practice. We have grip on your topic, know your subject, be positive and avoid stress. So thank you from my side. If you have any question, you can ask.
Okay, thank you so much, Fajr. So I want to know if a person has hesitation or hesitating in public speaking. So what strategies he or she may use or adopt? First of all, if a person is have a fear of public speaking or she hesitates, so first of all, she try to interact with most people around them. Try to practice in front of mirror or have confident कि he or she वो कर सकते हैं, believe in yourself or try small things every day that improve her or his speaking, because this is not the thing that you suddenly gain. It's step by step strategies that you prove helpful in your life. Okay, mainly confidence develop करना ज़्यादा ज़रूरी है for a public speaker. If you want to be a public speaker, so confidence is the first priority. Yes, you should be confident about what you speak, because if you are not confident, you are fear of going and interact and you hesitate or people lose their interest, because we have a fear that लोग क्या सोचेंगे, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा. So don't be afraid of anything, because this is basically life, how going on. So try to interact mostly with the people, with the positive people inside you that help in your speaking as well, your friends, your family circle, or try to participate in various co-curricular activities and practice more. ओके सो फजर हमारा टॉपिक था पब्लिक स्पीकिंग तो मैं ये जानना चाहती हूँ हमारी कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये मैथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है कि हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते फेस टू फेस तो ये जो हम जूम एप्स यूज़ कर रहे हैं गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं तो इससे हम कैसे अपनी प्रेजेंटेशंस को इफेक्टिव बना सकते हैं इन एप्स के जरिए गुड क्वेश्चन. अब जैसे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, फिजिकल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक आप जब फ्रेंड कर रहे होते हैं सारे लोगों के सामने, बट कोविड की वजह से आपके बेसिकली सारा सिस्टम ऑनलाइन आ गया है. तो आप इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे इफेक्टिव बना सकते हैं, लाइक जैसे मैंने पहले भी बताया कि डोंट मेस अप योर स्लाइड्स, मतलब कंटेंट आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है. ट्राई टू लर्न बाय हार्ट और यूज डिफरेंट कलर्स टू मेक योर स्लाइड्स इफेक्टिव, और more practice about have research, do research enough on your topic. जब आपको ग्रिप होगी और जब आप इजीली मतलब आपको सारा कुछ याद होगा तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चीजें आती रहेंगी. एक फेर ये भी होता है कि जब हम स्टेज पे जाने लगते हैं तो हमें यही होता है कि हमें भूल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है ना वो उसी लिहाज से सिचुएशन क्रिएट करने लग जाता है कि आपको जितना याद हो भी तो आप स्टेज पे जाके भूल जाते हो. तो ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू. ओके तो क्या की पॉइंट्स मेनली क्या की पॉइंट्स होने चाहिए एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो सा टॉपिक ले रहे हो वो ऑडियंस को इंटरेस्ट ग्रैब करेगा कि नहीं. आपकी टॉपिक बहुत मैटर करता है. उसके अलावा यू हैव अ प्लानिंग कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखनी है कि आपने कब से लेकर कब तक, और आप जो कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को या अपनी क्लास में, तो आपके इंट्रोडक्शन कैसे है ये मैटर करता है, आपका मेन कंटेंट लाइक थीम क्या है और आप कंक्लूड कैसे कर रहे हो. जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा होगा ना तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी डेवलप होने लग जाएगा लोगों का कि लाइक समथिंग इज न्यू, मतलब कुछ बताया जा रहा है. और सेकेंडली मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंट जो टैक्टिक्स आप यूज करते हैं तो स्लाइड्स का ही करते हैं, लाइक डिफरेंट कलर्स जो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक कलर्स का आपकी विजन पे बहुत वो होता है, इम्पैक्ट होता है. लाइक होता है ना डार्क कलर जो होते हैं ना वो डिस्ट्रैक्शन कोज करते हैं एज कम्पेयर टू ब्राइट, और थोड़े लाइट कलर्स दें तो इट लुक्स डिसेंट और ब्यूटीफुल. तो ये चीज़ें, और यूज डायग्राम्स, यूज पिक्चर्स टू एलेबोरेट योर टॉपिक, और डोंट मतलब कॉपी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके रीडिंग करना, इट्स नॉट गुड थिंग, और वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप बस रीडिंग कर रहे हो और कोई भी फिर आपका इंटरेस्ट नहीं लेगा उस टॉपिक पे. Okay. Or what I want to know is what steps we adopt if we
एंड हाउ वी कैन अट्रैक्ट आवर ऑडियंस, हम अपनी ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक मोस्टली ये होता है कि कोई भी स्पीकर होता है तो ऑडियंस जो है वो सोने लग जाती है। हमारी प्रेजेंटेशन अगर हम दे रहे होते हैं या पब्लिक स्पीकिंग कोई भी स्पीच कर रहे होते हैं तो मोस्टली बोर हो जाते हैं। तो हमें ऐसे कौन से स्टेप्स अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमारी ऑडियंस हमारे अट्रैक्शन में आ जाए। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसे ग्रैब कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टैक्टिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो ये बताए हैं कि ऑडियंस को ग्रैब करने का ये है कि आप की जो स्टार्टिंग है, आपका इंट्रोडक्शन है, आप कैसे स्टार्टिंग ले रहे हो अपनी। आपकी वॉइस कैसी है, आपके जेस्टर्स क्या शो कर रहे हैं। होता है ना, अगर हम स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ फर्स्ट, और फिर हम ऑडियंस की तरफ देखते हैं। ऑडियंस इंटरेस्ट तब लूज करती है जब आप, क्या होता है कि आपकी वॉइस जो होती है एक ही पिच में जा रही होती है, आप में कुछ चीजें एम्फसाइज मतलब नहीं कर रहे होते, एक ही टून में लेके जा रहे होते हो, आपका आई कांटेक्ट नहीं होता अपनी ऑडियंस के साथ, आप वॉल्स की तरफ देख रहे होते हो ऊपर नीचे ऐसे, और आपकी बॉडी पोस्चर नहीं होता सही, और यू आर क्रिएटिंग, मैंने आपको स्लाइड्स में मैंने पहले दिखाया था कि आपका क्रॉस्ड आर्म जो है वो ये शो करते हैं दैट यू आर लेस कॉन्फिडेंट और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर टॉपिक, यू स्टार्ट हेजिटेटिंग अबाउट इट। और आपका वॉकिंग होना चाहिए स्टाइल, अपनी आपने कोई डोमिनेंस या विसिनिटी बना लिया है, उसके इर्द गिर्द आप वॉक करके जब इंटरेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो आपकी तरफ ग्रैप होता जाएगा कि वाकई कुछ कहा जा रहा है, और फिर आपका लेजीनेस नहीं आएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे खुद भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है स्पीच करते टाइम, अगर भूल गया, परेशान हो जाना या थोड़ा स्ट्रेस में आ जाना, तो ये बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बी हैप्पी और हैव अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन you are looking on your audience, or have polite tone, or whenever you are going to emphasize the things, your pitch is going to be high। तो ये चीजें बहुत impact करती हैं आपकी presentation। I on experience these things। ओके, सो आप यहाँ तक आ गई हैं इस लेवल पे कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हैं, एज अ गेस्ट स्पीकर आपको बुलाया गया है। तो आपने कौन से ऐसे स्टेप्स अडॉप्ट किए थे और इतनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप विदाउट एनी फियर एक प्रेजेंटेशन को दे रही हैं यहाँ पे गेस्ट स्पीकर के तौर पे, और कितने आपने कितनी हर्डल्स और कितने जिनसे हैं बेयर किए हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। देखें, कोई भी गुड स्पीकर फौरन नहीं बन जाता, या ऑब्वियसली हर्डल्स मुझे भी बहुत बर्दाश्त करने पड़े। आपके पहले रिजेक्शन होती है, कि फिर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपना होप जो है, अपना लेवल जो है वो लॉस कर दे या नहीं। बिकॉज एवरीवन सेज दैट फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, कि फेलियर ऑप्शन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन फेलियर शुड बी एन ऑप्शन, बिकॉज व्हेन यू फेल you get up and that keeps you going। So when you, because you are starting from your experience, you learn from your mistakes, you are not going to start with the scratch। So I learned a lot from my failures, and I am focusing on my mistake। जब आप फोकस करते हैं ना कि आपने क्या कहाँ पिछली गलतियां की हैं और आप कैसे स्टार्ट नया लेंगे, तो आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है और आप अपनी उन गलतियों से सीखते हो और बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हो। हार्ड वर्क होता है, बट अगर हार्ड वर्क में भी स्मार्ट वर्क ना हो तो वो सक्सेस पे आपकी तरफ नहीं लेके जाता। अगर मैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मैं बात करूं, तो सक्सेस में मैंने पढ़ा था कि स्टेप वाइज आप अपनी सक्सेस पे जाते हो। उस स्टेप वाइज आपकी डिफरेंट हर्डल्स आते हैं जिसको आप ओवरकम करके या उससे सीख के आप आहिस्ता आहिस्ता जाते हो। तो इसी तरह मुझे भी पहले आया था कि आई वाज नॉट गुड पब्लिक स्पीकर, या मैं बहुत ज़्यादा फेयर करती थी, मेरे आई यूज टू शिवर कि मुझे नहीं जाना, मुझे इंटरेक्ट नहीं करना, ये वो। बट आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मेरा फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स ऐसा था, पार्टिसिपेट डिफरेंट एक्टिविटीज में किया जहाँ से आपको करेज आया, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हुआ। और उसके अलावा आई ट्राई टू लर्न माय स्पीच इन फ्रंट ऑफ मिरर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रिसर्च थी उस टॉपिक पे, काफ़ी ज़्यादा उसे मैंने रिसर्च की, एलेबोरेट किया कि मेरा टॉपिक क्या है, इस पे लोग क्या सोचते हैं और हमारी सोसाइटी की क्या नीड है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड सेट फिर आपको इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ के जो आप लर्न कर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती जो होता है आजकल रट्टा सिस्टम, वो बिल्कुल। इसलिए आप स्लाइड्स भी ऐसे ही बनाते हो कि ऑडियंस का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो आपका अच्छा पड़े ऑडियंस पे। तो
आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो आई ऑलवेज ask my audience के try to learn these things slowly gradually because it proves to be very helpful in your future life। और यही tactics हैं। Okay, that's great. Okay, last question because हमने आपका काफी टाइम ले लिया है। So ये मैं पूछना चाहती हूँ, there is a saying that first impression is the last impression. तो आप इस phrase को या इस sentence को किस तरह लेती हैं? Sorry, I don't got your point, can you repeat it? मैंने कहा है कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है, आप इस saying को किस तरह लेती हैं? Is it true or not? Yes, it is true। मैंने बहुत देखा है और इट्स माय ऑन एक्सपीरियंस के फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपका अगर मैं स्पीकिंग के लिहाज से बात करूँ तो आई स्ट्रांगली एग्री ऑन इट। और अगर मैं पर्सनैलिटी के हवाले से करूँ, लाइक पर्सनैलिटी में जैसे मैंने कहा कि आपकी जो आपके लाइक आपके ड्रेस कोड होते हैं, आपकी ड्रेसिंग होती हैं, तो उससे पीपल जज कर लेते हैं। तो आई डोंट बिलीव इट कि आपकी ड्रेसिंग से फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज हर जो स्टेटमेंट होती है वो हर सिचुएशन में फिट नहीं करती। आई से दिस अकॉर्डिंग टू माई स्पीकिंग कि अगर आपकी स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस ग्रैब हो जाएगी, ऑडियंस का इंटरेस्ट आप गेन कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वहां से कॉन्फिडेंस पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाएंगी कि आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत मतलब काम है, आराम से सुन रही है, इंटरेस्ट ले रही है, तो आपको स्पीकिंग करने में भी मजा आएगा। लाइक मैंने शुरू में था कि पब्लिक स्पीकिंग इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस, इज अ कन्वर्सेशन। लाइक यू टेक ऑडियंस एज योर ऑन फैमिली मेंबर्स या एज योर ऑन फ्रेंड्स, यू डोंट हेजिटेट कि कोई अननोन है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये स्टेटमेंट इस लिहाज से फिट होती है। Okay. Thank you so much, Fajr, for spending some time for us. I know it's time for national anthem.